Hey guys, I'm Ayushi. Welcome back to my channel AyuMakeoverss. I really hope that you are doing amazing. So today's video is just something really interesting, and it's a review plus a beautiful skincare before Diwali kind of a video. I really hope that you find this video helpful. साथ ही साथ एक beautiful सा skincare pamper session हम लोग करने वाले हैं before Diwali. If you are not planning to step out of your house, then this is something you can try definitely. तो हाँ, अगर आपके पास कोई भी फेशियल किट है या you can even purchase it from the market, क्योंकि ऑनलाइन तो अभी अगर आप ऑर्डर करोगे तो उसको आने में थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम तो लगेगा क्योंकि it's the pamper session, it's the relaxing session that you want to give your skin and your body. So that is what something we are going to convey and try in this video. And I really hope that this relaxing and the skincare video and the review thing you'll find somewhere helpful. And if you do so, then please just don't forget to give this video a thumbs up. Do comment down below what do you think and anything else if you want to say, and do share it if any one of your friends want to get some pamper session. And I'm also trying it out for the first time. I'm just not saying that this is going to be the best product or the worst product, just not that. I'm just going to give you my genuine opinion about this, how is this going to work on my skin and everything. So yeah, without just any further ado, we'll get started and let's start. And this is my facial kit. It's from Jovees. Basically Jovees anti-aging facial value kit. This has got 3 products in this, and yes, इसमें है आपका cleanser, facial scrub, face massage cream, skin toning gel, anti-aging pack, and a skin care cream. Yeah, this is what the packaging of it looks like. It's really classic and sturdy. This cost rupees 885. Pretty much okay with the quantity that it gives. Like 885 rupees में आपको per bottles में आपको 6 bottles मिल रही हैं. That is of 50 gram. Like आप इसमें कम से कम आप इसको 10 टाइम फेशियल कर सकते हो, which is a worth product. आपके value for money है definitely. So I'm gonna start off with this first thing, that is cleanser. It's basically infused with citrus and blackberry. This quantity, this has something amazing. आप इसको 10 टाइम से भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो definitely. इसको बहुत अच्छे से मैं अपने फेस पे मसाज करूँगी. आपको इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करना है. लिफ्ट योर स्किन अप टू मेक इट मोर फर्म एंड टाइट. So just go ahead like this in the upward circular motions. ये आप देख सकते हो मेरे स्किन में ये बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो चुका है. अभी I'm going to rinse it off with water and get back. Okay, तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है. क्लेंजर रिमूव हो चुका है पूरी तरह से मेरे स्किन से. Then I'm going to move on to the next step, that is the facial scrub, and this has apricot and almond in it. Okay, so first of all आपको बहुत ही चीज़ यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली है that कि आप स्क्रब करने वाले हो, and हेयर क्लेंजर के केस में आप थोड़ा सा हार्श हो सकते हो अपने स्किन के साथ, बट इन द केस ऑफ स्क्रब आपको बहुत जेंटली और सॉफ्टली स्क्रब करना है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ताकि आपकी स्किन और जो आपके टीयर्स हैं, जो क्लॉगिंग टीयर्स हैं, वो हार्म ना हो, आपका स्किन हार्म ना हो. सो दैट्स द बेसिक टिप जो आपको ध्यान रखना है. एंड यस, लेट्स स्टार्ट. So I'll just quickly wash my face and get back to you. Okay, so the product, the scrub has done a pretty decent job. मेरे जो भी clogged pores थे और जो भी white heads थे वो सब रिमूव हो चुके हैं. मैंने इस pretty clean
clean now with the white heads and black heads. ब्लैक हेड्स तो नहीं, वाइट हेड्स थे थोड़े, तो उसकी मैं पिक्चर यहाँ पे अटैच करने वाली हूँ. इतनी क्लियर पिक्चर नहीं है बट स्टिल यू कैन सी कि कितने वाइट हेड्स थे. And the product has done a very decent job. So we are just quickly going to move on to the third product, that is this face massage cream. This is infused with white germ and vitamin E. This is going to hydrate and give the moisture that the scrub has taken away. Take a good amount of moisturizing cream, and yes, let's quickly do this. थोड़ा सा I think ज़्यादा हो गया. This is going to take me long, but it's okay. And yes, अभी मेरी स्किन में मसाज क्रीम बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो चुकी है. इसको मुझे 5 मिनट्स लगे स्किन में अब्सॉर्ब कराने में. और हाइड्रेटेड, जो भी मॉइस्चर लूज हुआ था, जो भी मॉइस्चर और जो भी ड्राइनेस आई थी स्क्रब से, वो अब थोड़ी सी रिटेन हो चुकी है my skin. Now I'll move on to the fourth product that I have here is this. It's the skin toning gel with hazel and basil. Oh my god, this looks something like an aloe vera gel. Look at this. I take this much amount of the quantity and simply massage it well and nicely. Whoa, this feels so good. ये तो ठंडा ठंडा सा है. थोड़ा सा कूलिंग पैक जैसा काम कर रहा है. थोड़ा सा जहाँ पे मेरे को वाइट है सब ब्लैक है देना, जहाँ थोड़े पोर्स ज़्यादा है वहाँ पे थोड़ा सा ये मुझे इचिंग सा कर रहा है, बट इट्स ओके. कि ये जेल बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो चुका है. अब मैं बढ़ूंगी अपने नेक्स्ट स्टेप, दैट इज फिफ्थ स्टेप की ओर, दैट इज दिस एंटी एजिंग पैक. दिस इज इन्फ्यूज्ड विद सैंडल, सैफरन एंड हनी. ओके, सो आई एम गोइंग टू पुट द पैक ऑन माय फेस हेयर. कि इसको 20 मिनट्स तक आपको अपने स्किन पे रखना है, बट हाँ इतना हम लोग रखेंगे कि ये स्किन में बहुत अच्छे से ड्राई आउट हो जाए. उतने देर के लिए रखेंगे. 10 to 15 minutes is more than enough. अभी ये अच्छे से पैक अप्लाई हो चुका है. अभी I'm going to wait for 10 to 15 minutes and then I'm going to wash it off. So yeah, अभी rinse off कर चुके हैं. Then I'm going to move on to the last step, that is step number 6. It's the skin cream. So I'm going to take a good amount of moisturizer and simply apply it all over my face. थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी मैं ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा जो भी नरिशमेंट चला गया स्किन का वो वापस मिल जाए, दैट इज़ वाई. एंड जैसे इसको मसाज करेंगे अच्छे से अपने स्किन में और नेक में इन दी अपवर्ड डायरेक्शन. एंड यस, अभी हमारा हो गया है फेशियल कंप्लीट. आप देख सकते हो स्किन में मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर चुका है. एंड आई फील माई स्किन इज गुड नाउ. थोड़ा सा अच्छा सा फील हो रहा है मुझे थोड़ा सा अपने स्किन को पैम्पर सेशन देख के. एंड आई एम गोइंग टू रेट दिस प्रोडक्ट्स आउट ऑफ 5. सो आई एम गोइंग टू गिव देम 3.5. सो द क्लेंजर इन द किट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग क्योंकि उसके बाद ही मैंने स्क्रब यूज़ किया था. एंड द स्क्रब वेंट सो वेल. इट क्लेंस्ड आउट माई ऑल पोर्स एंड एवरीथिंग. तो मेरे पोर्स बहुत अच्छे से क्लीन हुए. सो द फर्स्ट 2 steps were good. Then moving on to the third. So the third one that I used was the face massage cream, which was absolutely amazing. Like वो जो मॉइस्चराइजर मैंने अप्लाई किया स्किन में फेस मसाज क्रीम, वो तो उसने जितना अच्छा सा हाइड्रेशन जो भी लॉस्ट हुआ था वो वापस किया मेरे स्किन को. तो I तो loved that. And after that I used the gel that was the basil. Wait just a second. This is a skin toning gel with hazel and basil. And I just
don't loved the fragrance of this. इसको मैंने अप्लाई किया, it no wonder gives the cooling effect to my skin, बट जहाँ पे भी कट हो चुके थे वहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा इरिटेशन मुझे दिया। लाइक जब मैंने उसको 2 मिनट के लिए छोड़ा था स्किन में ऑब्जर्व होने के लिए, एट दैट मोमेंट वो बहुत ज़्यादा पिंच कर रहा था मेरे पोर्स में, और जहाँ पे लाइक इधर पे मेरे को थोड़ा सा पिंपल था, एंड एट दिस पॉइंट इधर पे मुझे बहुत ज़्यादा पेन इसने मुझे दिया। सो आई क्वाइट ऑफ लाइक ये मुझे एवरेज में लगा, ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ज़्यादा खराब, लाइक एवरेज था ये। देन आई हैव यूज्ड द फेशियल पैक विच वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई लव्ड द पैक। उसको रिंस ऑफ करने के बाद आई हैव फेल्ट कि मेरा स्किन कितना अच्छा सा सॉफ्ट और स्मूथ हुआ। एंड आफ्टर दैट आई हैव यूज्ड द क्रीम जो अभी मैंने अप्लाई किया, द लास्ट क्रीम, द स्किन क्रीम, which is something I am not pretty sure कि ये कैसा काम करेगा, क्योंकि इसमें अच्छा हाइड्रेशन तो दिया है स्किन को, बट लाइक इट डज नॉट समथिंग शाइनी। थोड़ा सा जो शाइनी होता है फेशियल क्रीम में जो लास्ट में आप लगाते हो, तो दैट गिव्स मोर, थोड़ा सा इल्यूमिनेटिंग फिनिश होता तो वो ज़्यादा अच्छा लगता। लाइक अच्छा है, ऐसा नहीं है, इट्स ओके बट नॉट दैट गुड। थोड़ा सा इल्यूमिनेटिंग फिनिश में होता तो इट वुड एड इंस्टेंट थोड़ा सा ग्लो एंड एवरीथिंग, विच आई डोंट थिंक इस क्रीम की वजह से हुआ है। सो आई एम गोइंग टू अगेन से कि ये लास्ट वाली क्रीम जो मैंने अप्लाई की इज समवेयर इन द एवरेज, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, इन द एवरेज। सो आई एम गोइंग टू रेट द किट 3.5 out of 5. And yeah, that was my take about this kit. And if any one of you ने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है, then do let me know कि ये आपकी स्किन के लिए कैसा काम किया। And I really hope that you have enjoyed watching this video, and then do give this video a thumbs up, a comment, and do share it with your friends who need some pamper session at their home. Also, I'm going to list my previous videos in the comment section and also here on the I button. Please do not forget to check them out. Do subscribe to my channel for more such videos too. And I really hope I'll see you super soon in my next video in the next coming days. I'll see you in the next one. Bye.